Hello my dear student, welcome to Amit Kumar Pradhan Biology classes. Today we discuss human reproduction, a topic that is called menstrual cycle. And today we discuss menstrual cycle. What is menstrual cycle? Menstrual cycle is the reproductive cycle. It is the biological process. ये है कि biological process है, ये reproductive cycle है. यहाँ पर क्या होता है कि when the girls reach to the age of puberty, here the endometrium line degenerate. The uterine wall, inner wall of the endometrium is degenerate. Then this degenerating endometrium lines come out with blood vessel through the cervix and vagina. That is called menstrual cycle. Okay, this menstrual cycle, uh, flow in this menstrual cycle in the female primates only. Female primates means that is apes, monkey and human. Okay, this first menstrual cycle is menarche during the age of 14, during age the 12 to 14, that girls reach to the age of puberty. When age of the puberty start the menstrual cycle, that is called menarche. The first menstrual cycle is called menarche and the last menstrual cycle is called menopause. Now we discuss what is menstrual cycle. Menstrual cycle. What is menstrual cycle? Menstrual cycle is a biological process. Is a biological process. It is a biological process. Here the first menstrual cycle is called menarche. Okay, it is the only the female primates only. Female primates. Primates means that is apes, monkey and human. These are primates. Primates means only they have the in the reproduction they have one cycle, that is called menstrual cycles, occurs in only primates. Okay, apes, monkey and human is a primates. Now this primates, this is the what is menstrual cycle? Menstrual cycle is the degenerating of inner lining of uterus, degenerate during reach age of puberty. The inner lining of uterus, that is called endometrium degenerate and come out with blood vessel and come out with blood vessels through vagina is called what is menstrual cycle. Menstrual cycle, the period is the time is the 28 day. This is the average menstrual cycle days. This is the average menstrual cycle is the 28 days. Here during this menstrual cycle is there are two type of phase. One is called follicular phase, another is this follicular phase and degenerating phase. One is follicular phase menstrual cycle. One is follicular phase. This phase is growth the follicles, Graafian follicles, develop follicles. Another is secretory phase. This secretory phase
when the endometrium line is degenerate. Here, during the age of puberty, here FSH, the anterior pituitary secrete FSH, follicular stimulating hormone, and luteinizing hormone. This FSH help to develop the primary oocyte. FSH, follicular stimulating hormone, and luteinizing hormone help to develop what is primary oocyte to secondary oocyte. Or the develop primary oocyte. This primary oocyte develop during the fetal stage and arrested after the birth. No more primary oocyte added after the birth. Primary oocyte develop after the when the reach the age of puberty. Secondary oocyte, then secondary oocyte. This process is the follicular phase. Okay, this secondary oocyte develop in the Graafian follicle. Okay, primary oocyte, secondary oocyte, and Graafian follicle. In the Graafian follicles, what is secondary oocyte present after the what is rupture of the Graafian follicle? Secondary oocyte generate. And this secondary oocyte complete the meiosis 2, and that is in the which region? Oviduct. This that is called ovum, and ovum fertilized with the where? In the ampulla region, the widest part of the ampulla region. And secretory phase is the here the uh, after if the this Graafian follicle rupture, the ovum is released, the ovum is not fertilized, then what happened? The uterus line degenerate. Here the corpus luteum also secrete. Corpus luteum secrete progesterone. This corpus luteum secrete up to 9 days. After 9 days, the corpus luteum are degenerating. Progesterone not secrete. Here the progesterone, lack of progesterone, this uterus also degenerate. Okay, this is the secretory phase. Secretory phase means corpus luteum secrete progesterone. corpus luteum क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है. ओके, here needs the corpus luteum maintain the uterine wall. Progesterone maintain the uterine wall. And this uterine wall, जो ये uterine wall का क्या करता है? Maintain the vascularity. vascularity maintain करता है. ओके, यहाँ पर ये क्या है? हमारा यूटेरस है. ये क्या है? हमारा यूटेरस है. दिस इज द यूटेरस. दिस इज फॉलिपियन ट्यूब. दिस इज द फिंगर लाइक प्रोजेस्टर फिम्ब्रिए. दिस इज द ओवारी. दिस ओवारी secrete secondary oocyte. This is the ovum. Ovum reach to the ampulla region. Okay, here fertilization take place. After the fertilization, if the fertilization not happen, this is the ovary, primary follicle, secondary follicles. This is the primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle, and here it is the Graafian follicle. In the Graafian follicles, here oocyte present. Okay, if the Graafian follicle release the secondary oocytes, that is called ovulation. secondary oocyte जनरेट होने के बाद क्या होगा? जो corpus luteum, जो हमारा Graafian follicles का आउटर सरफेस रहेगा, ये क्या उसको बोलते हैं हम? corpus luteum. ये क्या है? दिस इज द corpus luteum. इस corpus luteum प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन करता है. प्रोजेस्टेरॉन. और जो ये हमारा एंडोमेट्रियम लाइन है, उसको वास्कुलरिटी मेंटेन करता है और इसको मेंटेन करके रखता है. ये हमारा क्या है?
यूटेराइन, यूटेरस है, ये क्या है यूटेरस, और ये है इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। ये क्या है हमारा एंडोमेट्रियम है। इस एंडोमेट्रियम को ये क्या करता है हमारा प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर इम्प्लांटेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि इम्प्लांटेशन होगा, ये हमारा जो जाइगोट डेवलपमेंट होता है, सेकंड स्टेज आता है, सेकंड स्टेज 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज को हम मोरूला बोलते हैं। मोरूला, इस मोरूला मलबेरी फ्रूट साइज रहता है। फिर मोरूला क्या रहता है ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है इस यूटेरस में इम्प्लांटेशन करता है। ये ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट में इम्प्लांटेशन होता है। ब्लास्टोसिस्ट के पास इम्प्लांटेशन होने के बाद हमारा जाइगोट इम्प्लांटेशन हो जाता है। इफ द इम्प्लांटेशन not take place in the uterus, the uterine wall degenerate. Okay, this is called what is menstrual cycle. The cycle start with the menstrual phase. इसको हम बोलते हैं menstrual phase. The cycle menstrual phase. ये क्या है हमारा एक menstrual phase. Next we discuss what is the cycle. Here it is the cycle, total cycle. You see the 28 days 1 14, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 14 सॉरी 7 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 and 28. Okay, this is the secretory phase 1 to 6. This 1 to 6 is the secretory phase. Secretory phase यहाँ पर menstrual flow होता है up to 1 to 5. जब 6 आ जाता है, this is the 6, when the female reach the puberty, anterior pituitary secrete FSH. This follicular stimulating hormone act as the primary follicle. First primary follicle develop, next secondary follicle, then tertiary follicle, फिर develop Graafian follicle. After the Graafian follicle rupture, around 14 days, the ovulation take place. Graafian follicle rupture, and around the 14 days, the rupture of the release of what is secondary oocyte is called ovulation. This 14 days is called ovulation. Ovulation take place in the 14 days. FSS and LS act, and here primary follicles develop secondary to tertiary to Graafian follicle. This is called ovulation. Okay, and here this is the 3 parts of the menstrual cycle. One is the follicular phase. This region is called follicular phase. follicular phase इसको हम क्या बोलेंगे follicular phase बोलेंगे। ये क्या है हमारा menstrual phase, and this is called secretory phase. This region is called secretory phase. इसको हम बोलेंगे secretory phase. Okay, secretory phase. ये secretory phase है। आफ्टर द ग्राफियन फॉलिकल रिलीज द ओवम, रिलीज करने के बाद क्या करता है कि हमारा कॉर्पस ल्यूटियम आ जाता है। जो ग्राफियन फॉलिकल ये कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होगा।
after the 9th day 1 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 up to 24 the corpus luteum is secrete progesterone. 15 to this 15 to 24 day the progesterone secrete progesterone secrete progesterone level is high because here uh, the here our uterus also lining maintenance during the what is the chance of pregnancy. If the pregnancy occurs, the uterus implantation take place in our where uterus, so the corpus luteum secrete progesterone and this progesterone maintain the uterine wall. After the 24th day the corpus luteum also degenerate. After the 24th day the corpus luteum degenerate and progesterone level is decreased. Progesterone level decrease, so our endometrium line also degenerate. जो हमारा एंडोमेट्रियम लाइन है इसे डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है. Okay, this is the menstrual cycle. Here now we discuss what is the now here lack of the menstruation indicate a pregnancy. It is indicate pregnancy. Lack of menstruation may be indicate pregnancy, indicate pregnancy or the due to the stress also. Lack of menstruation due to stress, poor health condition, also lack of menstruation due to poor. अगर यहाँ पर क्या होता है कि ये एब्सेंस होगा, मेंस्ट्रुएशन एब्सेंस होगा तो क्या होगा कि प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है. कहाँ पर कोई स्ट्रेस हो गया तो हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा कि हमारा मेंस्ट्रुएशन नहीं हो पाएगा. ठीक है. एंड नाउ डिस्कस ओव्यूलेशन. LH सर्च, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्च होगा. सर्च मतलब पीक में आ जाएगा. तब जो हमारा ये है हमारा क्या है ओवारी है. ओवारी में प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफियन फॉलिकल. ये है हमारा क्या है थिक लेयर है, आउटर लेयर ऑफ ओवारी एंड हियर ट्यूनिका अल्बुजिना प्रेजेंट. ये दोनों लेयर को क्या करता है कि ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसको रप्चर करता है. LH हेल्प टू रप्चर ऑफ ओवारी वॉल. LH सर्च मीन वहाँ पर ओवारी का जो वॉल है आउटर लेयर और ट्यूनिका एल्बुजिनिया उसको क्या करेगा ये रप्चर होकर वहाँ पर जो हमारा ओवम और सेकेंडरी oocyte जो है यहाँ पर रिलीज हो जाता है. ओके, इसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं. ठीक है. एंड LH एंड FSH अटेन द पीक लेवल एंड मिडिल ऑफ द साइकिल. मिडिल ऑफ द साइकिल मीन्स 14 days. Luteinizing hormone peak in the which stage? The 14 days, middle of the cycle. And today we discuss what is luteal phase. Luteal phase means Graafian follicle transfer into the corpus luteum. That is called luteal phase. Mean luteal phase, Graafian follicle rupture, Graafian follicle rupture and the Graafian follicle rupture and ovulation take place. ओव्यूलेशन हो जाएगा. फिर वहां पर जो रह जाता है उसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं. कॉर्पस ल्यूटियम एंड कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन. कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन. And progesterone it is necessary for pregnancy. It is necessary for pregnancy. नेसेसरी क्यों है? यूटेरस वॉल को ये क्या करता है मेंटेन करके रखता है, डिजेनरेट होने नहीं देता है, इसलिए वो नेसेसरी है.
एंड मेंस्ट्रुएशन लीड्स टू द डिजेनरेट ऑफ द, मेंस्ट्रुएशन क्या है, मेंस्ट्रुएशन डिजेनरेट द यूटेराइन वॉल, यूटेराइन वॉल को डिजेनरेट कर देता है।